Hi everyone and welcome back to my channel. Okay, so before I start this video, I would like to clearly specify that this video is not for the people who want to apply with their CUET marks, but the other details I mention about the spot round in this video are for everyone. I will clearly mention all the details that one needs to know who is participating in the spot round of IP. So the ones who did not get a seat in the previous rounds or the ones who want to upgrade their college, उनके लिए the dates I mentioned will apply. For the CUET candidates, dates अलग हैं. And multiple times I will say that this video is for the people who want to get admission with their CUET marks, so please bear with me. So today's video is one of the most requested videos again, because people are constantly asking ki how do you get an admission in IP University with your CUET marks. People have been asking continuously in the comments ki how do you enroll yourself to get an admission in IP University. And I just couldn't explain the whole procedure in just a single comment, and not even in multiple comments. I had to make a video, and without proper guidelines from the IP University I cannot declare anything to anyone, because I don't want to mislead anyone, obviously, because this is a very important issue. It is about one's college. So I was waiting for a PDF something to come on the website of IP University so I can read it out and I can give you the main instructions you should know for the spot round of IP University. And after I've completely mentioned all the guidelines, I will put a picture of the whole PDF at the end of the video so you can check that out and you can read it for yourself. And before I start this video, please subscribe to my channel. It helps out a lot. And also another thing is that people are panicking when they ask about IP ka admission process. I just want everyone to not panic and just read out the guidelines and act based on the guidelines. So there's no need to panic. You can definitely watch this video and read the PDF and then proceed with the other steps. And in the next videos I will try and ask a friend who's enrolling in the spot round to screen record for me so I can upload it in one of the videos so you can see the exact procedure how you can enroll yourself for the spot round. And I will sit a little on this side so I can display the PDF on the left hand side. So before when I told everyone how to enroll, they were like, अभी तो option नहीं दिखा रहा है, अभी सिर्फ वो दिखा रहा है BTech and LLB. So इसलिए दिखा रहा था क्योंकि तब तक शुरू नहीं हुई थी. And I tried to reply to many people but कि अभी सिर्फ 2 programs की spot round की dates and applications खुली हैं. So you need to wait. And now the other 22 programs offered by IP University, अब उनका spot round has started. So I'll just read out the courses and you can identify if your course is if your course का spot round की कोई information है इसमें. So there is Master of Science Environment Management, BSc Yoga, Master of Education 2023, Master of Science Biodiversity and Conservation, BTech Biotechnology. This is very boring. Okay, next. You can see the PDF. I'll put सारे courses here. You can see. So now the most important thing ki who all are eligible for the spot round counseling. And so the first thing is the people who have deposited 60,000 rupees and they have reported. So many people were many of my friends were confused ki if we have reported in our colleges और अगर हमें कोई और college चाहिए तो can we participate in the spot round? Yes, you can. Yes, you can participate and get a better college or the college you want. Next thing is if you have not reported, then also you can participate in the spot round. And if you have paid 60,000 and you have withdrawn from IP University, then also you can participate in the spot round. Same due वाला हिसाब है. But the main thing is कि इसमें अगर आपको seat मिली भी हुई है, then also you can participate in the spot round. And next is a person who has not paid the 60,000 also, they can also participate. And of course a candidate who has not been allotted any seat in all the rounds of counseling. Then all CLAT and JE mains के जो qualified students हैं जिन्होंने पहले भी participate नहीं किया था या 1000 या 1500 नहीं जमा कराए थे, दोनों चीज़ें, तो they can also participate. All non-admitted candidates and allotted candidates who have freezed their seats, they can also participate. So this is, imagine it as a new round for everyone. This one is open for I think a lot of students. And next is the withdrawal thing. I will come to this later. I will continue talking about the spot round first. So next comes the commencement of the spot round, which is the most important thing. So here it is written कि 6 September
एंड 6 सितंबर से 9 सितंबर तक जो स्पॉट राउंड की एप्लीकेशंस है वो ओपन हो जाएंगी. एंड ऑफ कोर्स आई वुड एडवाइस यू टू नॉट लाइक फिल योर एप्लीकेशंस ऑन 9th बिकॉज कुछ नहीं पता वेबसाइट का, तो पहले से ही करके रखना इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट. अभी स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशंस हैव नॉट स्टार्टेड, डू नॉट वरी, दे विल स्टार्ट फ्रॉम 6 सितंबर. तब जाके इफ़ यू फेस एनी इशू देन आई विल ट्राई टू लाइक as I said I'll upload the full procedure if I can, so you can subscribe and definitely stay tuned. तो अब if you have paid like 1000 rupees पहले से in the registration, then you only have to pay 500 spot round के लिए. And if you have not paid the 1000, चाहे आपने 1500 पे किया हो जो इनिशियली करना था, बट अगर आपने 1000 rupees नहीं पे किए हैं then you have to pay 1500 again. Moving on from that, then comes the filling of fresh choices. Fill the preferences एकदम फ्रेश की जो आपको मतलब नया अब अपने हिसाब से बनाना है. एंड इसमें लिखा भी था नीचे कहीं कि द चॉइसेस द प्रेफरेंसेस यू हैड मेड अर्लियर आर नल एंड वॉइड इन दिस राउंड. एंड अब ये प्रेफरेंसेस भरना 7th से स्टार्ट होगा एंड दिस विल लाइक क्लोज, द पोर्टल विल क्लोज ऑन 10th फॉर प्रेफरेंस फिलिंग. एंड देन द ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चलेगा 9th से लेके 11th तक. And the declaration of the spot round का result will be on 12th, 13th और 14th because इतने सारे programs हैं तो अलग अलग dates पे आएगा. But you should keep on checking 12th, 13th, 14th तीनों dates पे, and I will also make a video अगर जब भी आएगा. This is literally my promotion. Okay, next thing is आपको फिर अपना 60,000 पे करने हैं. 16th लास्ट डेट है तो उससे पहले कर देना. And you have to print the provisional allotment letter and the proof of payment. जो fee receipt आपको मिलेगी जब आप 60,000 पे करोगे वो आपको चाहिए and provisional allotment letter चाहिए. Next thing is the reporting of the candidates जिनको अब spot round में college मिला है. तो ये reporting start होगी from 15th to 18th August. Sorry, September. 15th to 18th September. And the most important thing, अगर आपने पहले participate किया था and you had paid 60,000 तो अब आपको वापस पे नहीं करनी. इट विल बी एडजस्टेड एंड इट विल बी लाइक ट्रांसफर्ड आई गेस टू द अदर कॉलेज यू हैव नाउ गॉट. तो ये स्पॉट राउंड प्रोसीजर जो मेन चीज़ है इज ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ओल्ड एंड न्यू विल बी अलाउड टू लॉग इन एंड दे विल हैव टू लाइक accept the terms and conditions of the spot round. See, all previous choices shall be null and void and they will have to fill new choices and preferences. एंड अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई सीट नहीं मिली तो जो आपको मिली थी और जिसमें हमने रिपोर्टिंग वगैरह सब कर दी थी दैट विल बी योर फ्रीज्ड सीट, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी. एंड येस, द मेन थिंग इज़ कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ये सोच के कि अगर मिला तो मेरे पास चॉइस हो जाएगी जो कॉलेज मिल रखा है और नए में, नो ऐसा नहीं होगा. अगर आपके पास जो सीट थी वो चले जाएगी अगर आपका अपग्रेड हो जाएगा. तो चूज़ वाइजली और वही कॉलेजेस भरना जो आपकी सीट से ऊपर आप प्रेफर करोगे, उनसे नीचे वाले मत भरना. एंड जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस है, सो यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन रीड इट फॉर योरसेल्फ. And then the next point is the fresh choice filling, which I have explained already. You can fill your preferences again. तो जैसे पहले था वैसे ही होगा आई थिंक. एंड जो रिपोर्टिंग के टाइम की चीज़ें चाहिए होंगी वो भी लिखी हुई हैं. एंड इफ़ फॉर दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक दिस वीडियो आउट. इसमें मैंने सारा ऐसे जो मेरे को मिला था चेकलिस्ट उधर से ही, तो मैंने उसकी पिक्चर डाली है, सो यू कैन चेक इट आउट. इम्पॉर्टेंट नोट एक और है कि जिसको नई सीट मिली है अपग्रेड होके स्पॉट राउंड में, दे विल हैव टू पे 5,000 एडिशनल अमाउंट. एंड अगर जो आपकी बैलेंस फ़ी होगी, अगर नए कॉलेज में फ़ीस थोड़ी कम है तो बैलेंस रिफंड होगा, ज़्यादा है तो यू विल हैव टू पे दैट. सो आई थिंक आई हैव चेकड आउट एवरीथिंग विच इज़ रिटन इन दिस PDF and I hope I like explained everything which was in this PDF and I hope you understood as well. इतना कोई एक्सप्लेन करने वाली ऑफ कोर्स चीज़ नहीं थी, बट आई जस्ट वांटेड टू रीड इट आउट एंड टेल एवरीवन बिकॉज आई प्रॉमिस्ड कि आई विल कीप एवरीवन अपडेटेड अबाउट द एडमिशंस. एंड येस, यू कैन चेक आउट योर एलिजिबिलिटी तुम्हारे CUET मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि अगर तुम्हारा GT और इंग्लिश नहीं दिया तो कैन यू पार्टिसिपेट, तो वो एलिजिबिलिटी दी हुई है वेबसाइट पे. सो इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो उसके बारे में भी. So yeah, I hope I was able to help you out a little bit, and if I missed anything तो comment कर देना, and if you want to ask anything you can definitely comment. Yeah, I think that's about it, and the next video will be about the withdrawal procedure of DU.
And I know I said कि अभी in the end I'll talk about how to withdraw from IP. So that I think will be covered in another video because this video is already too long. So basically this video was about how you can enroll yourself into IP University admissions in the spot round. So yeah, please like the video and subscribe to my channel, and I'll see you next time.